Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार अब तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। At the stock market, snapping 3 days of losses, Sensex climbs at 303 points, Nifty adds 98 points, Rupee gains by 23 paise against the US dollar. Wipro's quarterly consolidated net profit rises 2.8% year-on-year to 3,053 crore rupees, and the presidency of the G20 a major opportunity for India to work with developed and emerging countries to accelerate the pace of development, says G20 Sherpa Amitabh Kant. शेयर बाजारों में 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए सेंसेक्स 303 अंक बढ़ा। निफ्टी में भी 98 अंकों की तेजी हुई दर्ज। रुपया डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत रहा। विप्रो का तिमाही संकलित शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 2.8% बढ़कर 3,053 करोड़ रुपए हो गया और विकास को गति देने के उद्देश्य से G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है, कहा G20 शेरपा अमिताभ कांत ने। शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से, जहां 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.5% की बढ़त से 303 अंक ऊपर 60,261 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% की तेजी से 98 अंक बढ़कर 17,957 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.1% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% की वृद्धि दर्ज हुई। At the stock market, snapping 3 days of losses, Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 303 points, 0.5% to close at 60,261. Nifty at the National Stock Exchange advanced 98 points, 0.6% to 17,957. In the broader market, the Bombay Stock Exchange mid-cap index moved up 0.1% and the small-cap index gained 0.2%. Among the sectoral indices, metal and the tech indices climbed 1.1% each. Power index advanced 1%. IT and utilities index added 0.9%. Commodities index rose 0.8%. BankX and the financial services index gained 0.6% each. And the auto and the oil and gas indices moved up 0.5% each. But the consumer durables index fell by 0.9%. And let's have a look at a quarterly result from Wipro Limited. Wipro Limited has reported 2.8% year-on-year rise in the consolidated net profit to 3,053 crore rupees for the third quarter of this fiscal. Consolidated revenue for the quarter rose 14.3% to 23,229 crore rupees. Sequentially, the top line rose a meager 3%, but the bottom line increased by a sharp 15%. For the financial year 2023, Wipro expects a revenue growth from the IT services business to be in the range of 11.5 to 12% in constant currency terms. The operating margin calculated as earnings before interest and taxes improved by a sharp 120 basis points sequentially to 16.3%. During the quarter, the company won deals worth $4.3 billion, jumping 26% year-on-year. The company has announced a dividend of 1 rupee. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 23 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 33 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत जी, क्या कहेंगे आप? 3 दिनों की गिरावट के बाद आज हमने तेजी देखी है बाजार में, 300 अंक से ज्यादा बढ़ा है सेंसेक्स एंड ओवरऑल तेजी दिखाई दे रही है। क्या कारण मानते हैं आप इस टर्न अराउंड के और कितनी स्थायी दिखाई देती है? पहले सप्ताह में लास्ट वीक तो हमने देखा कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी, मार्केट में भी गिरावट रही और एक ग्लोबल जो एनवायरनमेंट था वो काफी एप्रीहेंसिव था।
काफी वॉलेटिलिटी हमने बाजार में देखी है पिछले 2 सप्ताह में, और फॉर्चुनेटली अब हम देख रहे हैं कि बाजारों में थोड़ी बढ़त और थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। उसका मुख्य कारण ये रहा कि जो आईटी क्षेत्र के जो अभी तक रिजल्ट आए हैं, तो चारों बड़ी कंपनी जो हैं भारत की, जो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो, ये 4 बड़ी आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं अभी तक, ये चारों ही उम्मीद से बेहतर हैं। आईटी सेक्टर के शेयर्स भी बढ़े हैं, हमने देखा वो इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टोरल इंडिसेस में आईटी शेयर था। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि भारत की आईटी सेक्टर कंपनीज काफी जायंट कंपनीज हैं। अगर हम TCS की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, 4 से 5 लाख एम्प्लॉइज दोनों कंपनीज में है, और वहाँ ग्रोथ जो है वो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव है। उनकी कमेंट्री भी पॉजिटिव रही है। दे हैव गाइडेड फॉर ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड ग्रोथ इन रेवेन्यूज, जो मार्केट को उम्मीद नहीं थी। पर मुझे लगता है कुल मिलाकर आईटी क्षेत्र के जो रिजल्ट आए अभी तक, उससे काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ है भारत में। Puneet, just looking at the next set of quarterly numbers, which are the companies likely to be market drivers, as we have seen for the IT index? So, Arjun, primarily right now, markets are very focused on results from financial sector companies, from automobiles, and then some of the large commodity players like metals, from steel companies, copper companies, oil companies. So I think we are expecting good numbers from financial sector and automobile sector stocks from companies, but commodities could disappoint a little bit. Also, very big FMCG companies will be reporting later next week and onwards. I think FMCG again could disappoint. So it is going to be a mixed bag, but I think mostly banks and automobiles should do better. और अगर जो हम मैक्रो आए हैं कल आंकड़े, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर का 5.7% आया है, लेस देन 6% फॉर द सेकेंड मंथ एंड 1 ईयर लो, एंड IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है वो नवंबर में 7.1% हो गया है, 5 मंथ हाई। आपको लगता है कि ये आंकड़े भी उत्साहजनक हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल सोनू, देखिए ये जो मैक्रो नंबर्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दर्शाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्यादातर जब हम बात करते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स की या सेंटिमेंट की, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को इफेक्ट करते हैं। उससे हम ये आंकते हैं कि बाजार इमीडिएटली क्या होगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि इन्फ्लेशन जो 5.6, 5.7 वो काफी कंफर्ट जोन है सेंट्रल बैंक के लिए। मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है फरवरी में, उसमें शायद हम एक और 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखें। पर मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद इंटरेस्ट रेट इंडिया में नहीं बढ़ाएगा, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और ऑलरेडी वी आर 6.25, आई थिंक वी कैन गो टू 6.5, बट दैट शुड बी द एंड ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक। इनफैक्ट आज ही एक बड़े बैंक ने फोरकास्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर, या सॉरी 2023 के एंड में, इस करंट ईयर में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट्स में कमी आनी शुरू हो जाए। तो वो एक पॉजिटिव चीज है। साथ में ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो आया वो भी उम्मीद से बेहतर था। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने अच्छे नंबर्स आएंगे, पर वो भी उम्मीद से बेहतर है। तो मुझे लगता है कि जो हम बहुत हार्ड लैंडिंग या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न काफी ज्यादा आएगा इस साल, शायद वो कुछ हद तक वो एक्सपेक्टेशन उसमें कुछ कमी आई है, और मे बी वी आर हेडिंग फॉर व्हाट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग। Puneet, do you see the market at a pivot level right now after 3 days of losses? The last day of the trading week has seen a gain, and it's not been choppy trading today. It was going up steadily. How do you see next week trading after we have examined the market drivers in terms of corporate performance and, of course, the macro data that's come out? So, largely, if you look at the last couple of weeks, market has been quite volatile. In fact, goes up one day, goes down the next day, but it has been moving in a very narrow range. So it has been hovering around 17,800, 17,900 kind of level for the Nifty, and I think market players are not taking very big bets either way.
either on the market going down or otherwise. Secondly, I think we will be getting closer to the annual budget. Budget is a big deal for the markets always. Markets, they can move up or move down a lot closer to the budgets or after the budget. So I think next couple of weeks we are going to see the markets trade in a narrow range and then take the cue from interest rate hikes or whatever monetary policy is in the first week of February and the budget. So I think next couple of weeks markets are going to be volatile. They will move either way, but those moves will be relatively a smaller range, and then after the budget, of course, there could be a big move. आपने बात की बजट की जिसमें 3 हफ्ते से कम बचे हैं, सो कौन से पैरामीटर्स हैं बजट के जो बाजार के लिए ज्यादा कहें कि महत्वपूर्ण है, जिन पर नजर टिकी होगी इन्वेस्टर्स की? कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है बजट? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लॉन्ग टर्म फैक्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को, और कुछ इमीडिएट शॉर्ट टर्म मूव्स होते हैं. तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसपे बाजार फोकस करता है वो फिस्कल डेफिसिट का ही रहता है. उसका कारण यह है कि जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार को उतना बोरोइंग करनी पड़ती है और वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर असर डालता है, उसको टाइटन करता है अगर बहुत ज्यादा डेफिसिट हो. तो जब भी बजट आता है तो उसकी बैलेंसिंग कैसे हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सेकेंडली, कुछ पॉलिसी मूव्स भी हो सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के. बाकी कुछ और प्रोग्राम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू गिव इंडिया दैट कॉम्पिटिटिव एज इन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि काफी उम्मीद है कि बजट काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेप्स लेगा टू गिव अ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग. ये तो हुई बड़ी जो लॉन्ग टर्म के फैक्टर्स की बात है. जो शॉर्ट टर्म में नेचुरली जो इफेक्ट होता है हमेशा वो जो टैक्स रेट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स की बात करें हम, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें. और इस साल जो काफी ज्यादा बाजार को फोकस्ड है वो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं. तो मुझे लगता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को बाजार काफी क्लोजली वॉच करेगा और उसके बाद वी कुड सी अ बिग मूव बेस्ड ऑन द चेंजेस इन कैपिटल गेन्स टैक्स. Puneet, apart from the fiscal deficit that the government needs to tackle in the upcoming budget, how do you see the FIIs reacting to the budget announcements? They were the net sellers once again in the market today. The DII is covered for them. So it's a question of how the FIIs are going to buy in back into the market, and how long can the DIIs cover to this extent? So interesting. The point is that FIIs, who were buyers in December, have again turned sellers, and big sellers. They've been selling roughly crores a day, which is quite heavy selling by FIIs. That is also driven by global factors right now, but to a large extent, I think there is again profit booking at higher levels. Having said that, FII behavior is more affected by what is happening to the US dollar. US dollar fortunately is declining, so the dollar index is down now to about 102. So my own expectation is that if dollar goes down any further, FII selling will stop. They will not be tempted to sell at lower dollar index. In fact, most of the expectations is that this year emerging markets will outperform US markets. So we could actually see FII start buying after February. So my own take is that whatever selling by FIIs we are witnessing right now, I think that will last at the most another few weeks or something at best. I think later this year, maybe February or March onwards, we will see FIIs will turn net buyers in India. आपने बात की डॉलर की डॉलर में कुछ वीकनेस आई है, 102 पे आ गया है डॉलर इंडेक्स. जो भारतीय रुपया है उसमें आज 23 पैसे की मजबूती आई है, 81 रुपए 33 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर है. रुपए में हमेशा ये रहता है कि जैसे आईटी सेक्टर है, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनके लिए एक सर्टन लेवल ऑफ रुपी ऑप्टिमम रहता है. अभी आपको क्या लगता है कौन सा लेवल है रुपी का जहां स्टेबलाइज होने की आप उम्मीद करते हैं और जो अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए? देखिए सोनू, रिजर्व बैंक का ये कोई एक लेवल वो टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन उनका ये इच्छा रहती है कि रुपए में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट ना हो, क्योंकि अगर बहुत वॉलेटिलिटी होती है तो उससे जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाती है. तो मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बिल्कुल ग्लाइड पाथ पर रुपए को गाइड करता है. और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा अपना अनुमान यह है कि गिवन द सिचुएशन रुपया जो है वो 80 रुपए से लेके 82 या 83 के बीच में
ट्रेड करेगा और रिजर्व बैंक चाहेगा कि वो वही मेंटेन करे। इनफैक्ट जो दूसरी बड़ी करेंसीज हैं, यदि हम येन की बात करें, जापानीज येन काफी अप्रिशिएट हुआ है पीछे, यूरो, पाउंड, ये सब करेंसीज काफी अप्रिशिएट हुई है। इनफैक्ट येन कल येस्टरडे 2.5% अप्रिशिएट हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी करेंसीज काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। आरबीआई का ये इंटरेस्ट है कि वो स्टेबलाइज करे रुपये को। आई थिंक 80 to 83 इज द लेवल वेयर इट मे स्टेबलाइज। And to what extent do you find the oil prices right now on the sentiment of global investors and the DIIs when they look at whether they should buy into the market or not? So oil, Arjun, is a very interesting commodity. Again, we have seen there are many counteracting forces which are there always for oil as a commodity, because dollar is going down. So the like gold has gone up, therefore oil also goes up. They usually go up in the same direction. So we have seen oil being supported, but globally the demand for oil is not growing very rapidly. My own expectation is that oil prices may stay at current levels for next few months, but then long-term trend in oil is definitely lower. We are going to see lower oil prices by end of the current calendar year. I have no doubt about that. Maybe by middle of the year and later, we might see the oil prices might head lower. So ओवरऑल आपकी क्या एडवाइस होगी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वर्ष 2023 के लिए, जो भी अभी चैलेंजेस हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अभी तक भी रिसेशन की बात हो रही है, और भारतीय जो रेजिलियंस है, भारतीय मजबूती है, पूरे इस सिनेरियो को देखते हुए क्या आपकी एडवाइस होगी? हाँ, तो सुनो, मैं कोशिश करता हूँ इसको कुछ करने की। पहली बात यह है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, और उसका कुछ नेगेटिव असर भारतीय बाजारों पर जरूर पड़ेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मुझे लगता है कि अगले 3, 4, 5 महीने बाजारों का रुख जो है वो कमजोर रहेगा ग्लोबली। भारत में भी उसका नेगेटिव प्रेशर रहेगा, लेकिन क्योंकि इंडियन मार्केट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म यानी अगले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में काफी अच्छी तेजी आएगी, तो मेरा अनुमान है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको अपना निवेश जारी रखना चाहिए और वो निवेश करते रहें और अगले 1-2 वर्षों में उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो लंपसम इन्वेस्टर्स हैं वो मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ा देख करके इन्वेस्ट करें, थोड़ा कॉशियस रहें। जहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा अपना अनुमान यह है, जो मैं जितने एनालिस्ट से बात करता हूं और हम इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में बात करते हैं, तो इस वर्ष हम देखेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे काफी एक्शन होगा। कुछ चुनिंदा शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और लेकिन ब्रॉडर मार्केट मुझे लगता है वो काफी लैकलस्टर रहेगी तो फॉर द फर्स्ट 6 months। तो ये ध्यान में रखकर निवेशक इन्वेस्ट करें। Puneet, just in concrete terms and taking a cue from what you just said, the volatility index for the stock markets in India is under 15. We don't have any data on the volume of transaction. What's your take and what is that reflecting? So, interestingly, the VIX in India has been actually ruling pretty low at 13-14. It has slightly risen last week. My own sense is that it will rise further. I think we will see VIX rise to about 18-19, where it's kind of average for in India. In fact, in USA, the VIX was at 22-23, so they were far more volatile. And yesterday, the VIX in USA went down quite a bit and went below 20. So, having said that, basically, higher VIX will, like we all know, it's a Fed index. So, higher VIX will mean somewhat more apprehension about the market and therefore more volatile markets. So right now I can say that I can say the VIX definitely is likely to rise and it will lead to more volatility in the market. Volumes are pretty high actually. Volumes are very, very high. That is also because derivative volumes are very large now in India. India is among the largest exchanges in the world in derivative volumes. So my own sense is that, which is good, because if you have higher volumes, then the pricing of stocks is very efficient. So largely I think volumes will continue to be high. Maybe we'll have record volumes this year. But VIX will still rise in my own estimate. चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख रहा। ये बढ़त अमेरिका में खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में कम हो जाने के बाद आई, क्योंकि इससे निवेशकों की उम्मीदें बढ़ गईं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में वृद्धि की गति फिर धीमी कर सकता है।
चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग दोनों 1% की बढ़त में रहे। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.9% की वृद्धि में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.8% की बढ़त आई। हालांकि जापान का निक्केई सूचकांक 1.3% की गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.6%, फ्रांस का कैक 0.5% और जर्मनी का डैक्स 0.1% की बढ़त पर थे। आर्थिक खबरों में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से आज पता चला कि नवंबर में यूके का सकल घरेलू उत्पाद 0.1% की दर से बढ़ा। रॉयटर्स ने अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान दिया था कि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में जीडीपी 0.2% की गिरावट में रहेगा। आपकी संक्षिप्त सी टिप्पणी, जापान में जो गिरावट आई है, क्या उसका कोई कोरिलेशन येन की एप्रिसिएशन से है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, येन वहां पर बहुत वोलेटाइल रहा है और दूसरी छोटी बात यह है कि जो जापान में लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रिजीम था, मार्केट का ये मानना है कि वहां पर लो इंटरेस्ट रेट्स अब खत्म होने वाले हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इनफैक्ट जो अब इन्होंने कैप रखा था बॉन्ड यील्ड पे 0.5% का, वहां पर बॉन्ड यील्ड उसको कैप को क्रॉस कर गई है। तो डेफिनेटली ऐसा मार्केट का अनुमान है कि इंटरेस्ट रेट्स जापान में थोड़े बढ़ेंगे और लिक्विडिटी कम होगी। जो आज बड़ा आंकड़ा जो आया, जो यूके का जीडीपी ग्रोथ का है, वो काफी चौंकाने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते थे कि वहां पर रिसेशन चलता रहेगा, 0.2% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन आएगी, उसके सामने वहां पर 0.1% ग्रोथ आई है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा नंबर है। हालांकि मार्केट्स ने उतना अच्छा रिएक्ट नहीं किया उसको, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा नंबर है। और जो एक आशंका है हमें कि रिसेशन आ जाएगा, ग्लोबल रिसेशन आएगा, वो उससे इसको कुछ राहत मिलती है। और मुझे लगता है कि सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका में, जो बहुत मुश्किल है, तो बहुत ही कम हुआ है हिस्ट्री में कि इकोनॉमीज में सॉफ्ट लैंडिंग हुई हो, वहां पर रिसेशन नॉर्मली आता है। पर मुझे लगता है कि एक उम्मीदें जागी हैं कि मे बी वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ इकोनॉमी इन अमेरिका एंड जापान, यूके फ्रॉम दिस डेटा. Puneet, briefly looking at the United Kingdom, and we have Prime Minister Rishi Sunak there, the GDP has risen marginally by 0.1%, but inflation continues to remain high. Do you see the UK making a U-turn on its breakaway from the European Union to contain inflation? After all, they have always enjoyed the benefit of being a part of it and keeping inflation low. Do you see a U-turn there? So, in fact, UK was very late in raising rates. They continued to, because they were facing a lot of economic challenges, and they continued to have a relatively easier money policy compared with European Union and USA. And only lately they started raising rates. But inflation in UK has been very, very high. In fact, and because UK imports a lot of its own requirements, and they were facing this global inflation challenges. My own take is that UK's economic challenges are really persistent in many ways. They will have to relook at this whole and probably reset the economic policies. Very, very complicated. But yes, I think they will continue to raise rates at least for the time being. They need to catch up with the rest of the world as far as monetary policy is concerned. Well, let's have a look at the U.S. markets. Now, U.S. markets ended higher yesterday, extending recent gains as data showing a fall in consumer prices in December bolstered expectations of less aggressive interest rate hikes from the Fed Reserve. U.S. consumer prices unexpectedly fell for the first time in more than 2.5 years in December amid declining prices for gasoline and other goods, suggesting that inflation was now on a sustained downward trend. The consumer price index in the 12 months through December increased 6.5%, the Labor Department said yesterday. Also, a separate report showed weekly jobless claims for the state unemployment benefits fell 1,000 to a seasonally adjusted 205,000 for the week ended January 7. The claims have remained low despite high-profile layoffs in the technology industry as well as job cuts in interest rate-sensitive sectors like financing and housing. So the Dow Jones Industrial Average rose 217 points, 0.6% to close at 34,190. The S&P 500 gained 14 points, 0.3% to 3,983. And the Nasdaq Composite added 69 points to 11,001. Puneet, your take on the U.S. economy in terms of the purchasing power. Is that the reason why we are seeing prices actually come down to meet demand meeting supply or supply meeting demand? So usually on the subject of purchasing power, actually for US it comes from strength in the dollar. As we see dollar index goes up,
the purchasing power of the Americans goes up, and their per capita income, which is roughly about $45,000, that goes higher. Having said that, I think that in USA right now we're seeing very favorable economic data. We are seeing inflation coming down. In fact, December month-on-month inflation was actually negative. It was minus 0.1, which is rare. You said it was a low of 2.5 years. Having said that, even then the labor market continues to be very strong. So in a way, it is a Goldilocks situation that your inflation comes down, but employment remains high. So this is something that you really dream about. But I think that is still the last piece in the puzzle which will fall. So if I look at it, I think USA right now is heading towards a soft landing. Very difficult, as I said earlier. But right now, if you look at the data, the possibility is that US will have a soft landing. Secondly, I think US Fed will not raise rates beyond 5% now. लेते अगली खबर। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति तेज हो सकेगी। नई दिल्ली में आज थिंक 20 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस में श्री कांत ने कहा कि G20 ने पहले भी कई अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व किया है और उनमें कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देश जिम्मेदार है और भारत विश्व के सामने शून्य कार्बन उत्सर्जन का उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम है। हमने समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर श्री अमिताभ कांत ने कहा कि डिजिटल तकनीक की मदद से लोगों के खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है। आपको ब्रीफली लगता है कि भारत ने एक एग्जाम्पल सेट किया है एंड आप रिजल्ट्स देखते हैं G20 से? हाँ, बिल्कुल। जो इंडिया का, इनफैक्ट श्रीकांत ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, एक्चुअली कार्बन एमिशंस तो उन्होंने ज्यादा करते हैं और आज भी वो ज्यादा करते हैं। और भारत ने काफी ज्यादा उस पर जल्दी कंट्रोल करना शुरू करा है कार्बन एमिशंस पे, और हमारी उम्मीद है कि बाय 2050 हम कार्बन एमिशंस को जीरो कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट होगी। बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन को जरूरत है चीप एनर्जी की, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, बट आई थिंक वी कैन डू दैट। In more news, the Union government is likely to increase capex by 30% to 9 trillion rupees in the next fiscal to fuel growth, global firm Barclays has said. In a note, economists at Barclays say in a pre-election year, we do not expect any material push to increase the pace of fiscal consolidation, and any extra fiscal room is likely to be spent to ensure economic growth remains robust. In more news, global crude oil prices rose today on solid signs of demand growth in top oil importer China and expectations of less aggressive interest rate rises in the U.S. So Brent crude futures rose 53 cents to $84.56 a barrel. U.S. crude futures gained 55 cents to $78.94 a barrel. Very, very briefly, is China likely to push oil prices up? Yes, definitely. I think in the short term, China reopening is pushing and supporting oil prices higher. So that will continue for next few months maybe. And after that, it will kind of stabilize. But right now, China is a big factor in oil prices. So आपको लगता है कि $100 को क्रॉस करने की भी आशंका है? देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ गोल्डमैन सैक्स ने कहा है $110 की उन्होंने प्रोजेक्शन करी है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मे बी $90-95 इन द शॉर्ट टर्म, बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। आइए रुक करते हैं प्रेशियस मेटल्स का। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 121 रुपए की बढ़त से 56,236 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। हालांकि चांदी 145 रुपए की गिरावट से 68,729 रुपए प्रति किलो पर थी। अभी आप सोने को कैसे देखते हैं, सोने और चांदी को एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? देखिए, अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि सोना चांदी दोनों अच्छी ऑप्शंस हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो जो $1900 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आंकड़ा गोल्ड ने क्रॉस किया है, मुझे लगता है इसमें रैली अभी बरकरार रहेगी। तो लगता है कि बढ़ेंगे प्राइसेस। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। पुनीत जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने विभिन्न आर्थिक विषयों पर हमें विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, snapping 3 days of losses, Sensex climbs 303 points, Nifty adds 98 points, Rupee gains by 23 paise against the US dollar. Wipro's quarterly consolidated net profit rises 2.8% year-on-year to 3,053 crore rupees. And the presidency of G20, a major opportunity for India to work with developed and emerging countries to accelerate pace of development, says G20 Sherpa Amitabh Kant.
And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.